We are going to discuss Hamlet as a tragic hero. You people are already well aware of the Greek conception of a tragic hero because you have studied it in unit number one. The principles laid down by Aristotle regarding a tragedy, that what is tragedy and what are the traits or features of, और यू कैन से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। सो आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ट्रेजिडी आपको पता है इन जनरल दैट इट इज़ अ टेल ऑफ सफरिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि माशरे में एक अच्छा रैंक रखता है और एक अच्छे किरदार का मालिक होता है, ठीक है। जनरली ट्रेजिडी के अंदर उस इंडिविजुअल की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज़ फ्रॉम prosperity to adversity, ठीक है। एंड इन सर्टन सिचुएशंस कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम prosperity to adversity इट मे लीड टू द अनटाइमली डेथ ऑफ द हीरो, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं ट्रेजिक हीरो के हवाले से। जनरली ट्रेजिडी जो है, ट्रेजिडी अराउजेस आउट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है इट exists between the hero and the society, नंबर वन पे। नंबर टू पे द कॉन्फ्लिक्ट could be of internal nature, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हीरो के डाउनफॉल का बायस बनता है, वो कॉन्फ्लिक्ट या तो हीरो और माशरे के बीच में या हीरो और किसी और शख्स के बीच में होगा, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट। या फिर द कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ गोइंग टू बी एग्जिस्टिंग बिटवीन इनसाइड द माइंड ऑफ द हीरो, कि जो हीरो है उसका अपना जहन, इसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इट कुड बी ऑफ इमोशनल नेचर। सो इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो ऑडियंस हैं उनके अंदर जो इमोशंस हैं, पिटी एंड फियर के, वो जनरेट होते हैं और फिर उन इमोशंस का कैथारसिस होता है, ठीक है। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है ट्रेजिडी का जो कि एरिस्टोटल ने दिया था। शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज़ जो हैं ये भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने इसको सेनेकन मॉडल को फॉलो किया है। सेनेका जो था ही वाज अ रोमन राइटर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही हैज रिटन 10 tragedies, and since he was a Roman writer he came after Aristotle, so he must be aware of the principles of tragedy that were laid down by Aristotle in his book poetics, so he has written his tragedies following those principles, ठीक है। However, there is much bloodshed and violence in Senecan tragedies। तो इसी तरीके से रेनेसां के जो राइटर्स हैं जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो शामिल है, विलियम शेक्सपियर शामिल है, टॉमस किड शामिल है, इन लोगों ने सेनेकन मॉडल को फॉलो किया और तकरीबन जो क्लासिकल ग्रीक ट्रेजिडी थी उसी के बेसिक पैटर्न को लेकर ये आगे चले इंग्लिश ट्रेजिडी के अंदर, ठीक है। लेकिन मॉडर्न क्रिटिक्स जो हैं, मॉडर्न क्रिटिक्स ये जो इमोशंस हैं पिटी एंड फियर के, इनको वो बाइनरी रिस्पॉन्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के तौर पे लेते हैं, ठीक है। पीटी जो है इट इज़ अट्रैक्शन। पीटी ज़ाहिर है हमारे अंदर उस वक्त जनरेट होती है जब हम किसी करेक्टर के साथ हमारी पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप होती है और हम सिंपथी फील करते हैं, तो दैट इज़ वाई वी फील pity toward an individual. Fear, on the other hand, डिसएसोसिएशन फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट होता है, और ये फियर हमें रियलाइज़ करवाता है कि जो सफरिंग्स हैं करेक्टर की वो अनजस्टिफाइड सफरिंग्स हैं, यानी कि द करेक्टर, द मेजर करेक्टर, द लीड करेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट, ही शुड नॉट हैव सफर्ड दैट मच। अकॉर्डिंग टू ब्रैडले 1904, शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज जो हैं इनका भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी का। हम ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस कर चुके हैं जब हमने शेक्सपियरियन ट्रेजिडी के फीचर्स को डिस्कस किया था, ठीक है। अब बाद सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट जो है इट एग्जिस्ट बिटवीन एक्सटर्नल हीरो एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। बाद सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है इट एग्जिस्ट विद इन द माइंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। फॉर एग्जांपल हैमलेट, हैमलेट जो है ही इज़ divided against himself. He, one part of him wants to act and wants to execute Claudius. Uh, on the other hand, the other part of him decides no, you should not do it at this moment, rather you should do it a bit later, ठीक है। So there is a contrast, there is a conflict
going on in Hamlet's personality. This conflict is between the weakness and the courage. This conflict is between frailty and his strength. frailty का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब हमने कोटेशन डिस्कस की। ठीक है, फ्रैलिटी का मतलब होता है नाजुकी, ठीक है, कमजोरी। और स्ट्रेंथ, अब ऑब्वियसली हैमलेट जो है, बिकॉज ही इज अ प्रिंस, सो ही हैज स्ट्रेंथ टू डू सम थिंग्स, एंड एट द एंड हम देखते हैं कि ही एक्ट्स विद दैट स्ट्रेंथ। Now, by showing the personality of Hamlet, that he is divided against himself, जो मेन मकसद है शेक्सपियर का वो है टू प्रेजेंट बिफोर अस द डीपर साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो उसका चीफ प्रोटैगनिस्ट हैमलेट है, उसका जहन, उसकी साइकी, उसकी थॉट जो है वो हमारे सामने डाइसेक्ट करके प्रेजेंट करना चाहता है। हैमलेट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उसका मेलन कॉलिक बिहेवियर है, वो उसका जो इंटरनल साइकोलॉजिकल सफरिंग्स हैं, जो इंटरनल साइकोलॉजिकल डिवीजन्स उसके जहन में चल रही हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ज़ाहिर है मेलनकॉलिक मीन्स टू बी सैड विदाउट एन अपेरेंट रीजन। ठीक है, अब ज़ाहिर है 40 डेज हो चुके हैं उसके फादर की डेथ को, तो ऑफिशियल जो है वो मॉर्निंग भी पीरियड है जो एंड हो चुका है, तो फिर अफसोस इतना ही होता है ना, इससे ज़्यादा तो अफसोस नहीं होता। लेकिन अभी भी वो सैड है, तो फिर देर इज़ समथिंग इंटरनल गोइंग ऑन इन हिज माइंड। हैमलेट अंडरगोज अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसका माइंड है, फ्रॉम एन हैप्पी इंडिविजुअल ही बिकम्स अ मेलनकॉलिक इंडिविजुअल। और जो उसका चेंज जो उसकी पर्सनैलिटी में आता है, इट इज़ ऑब्जर्व बाय हिज फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली रेशियो। और रेशियो के बाज़ कमेंट्स बाज़ जगह पे ऐसे हैं कि हमें रिफ्लेक्ट होता है कि हैमलेट्स बिहेवियर हैज़ अ चेंज, यू नो, ड्रास्टिकली, एंड ही हैज़ बिकम अ मेलनकॉलिक इंडिविजुअल। अब ज़ाहिर है मेलनकॉली की और भी वजूहत हैं। ही हैज़ बीन अनेबल टू सी हिज beloved. He knows that his beloved mother, has married his uncle, who is the murderer of his father. Furthermore, he has lost his father as well. So these are the multiple reasons that are cause of his melancholic behavior. अच्छा, अब हैमलेट के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में वो फंस चुका है, वो सर्कमस्टांसेस उसको फोर्स करते हैं कि वो अजीबो गरीब अंदाज में रिएक्ट करता है उन लोगों के साथ जिनके साथ वो क्लोजली एसोसिएटेड है। लुक एट हिज रिएक्शन विद हिज मदर, कि वो अपनी माँ के साथ जिस अंदाज से बिहेव करता है, उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगाता है दैट यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, यू आर इमोडेस्ट, यू आर इमोरल, एंड यू आर अनफेथफुल टू माई फादर एज वेल। ये सारी एक्यूजेशन जो है वो हैमलेट लगाता है। अब जब एक करेक्टर जो कि हु हैज़ नोबल बर्थ, according to societal perception, he should not be acting like this. Rather, he should be acting in an honorable way. Now the situation he is in, Hamlet जिस situation के अंदर है, जिस नफसियाती situation के अंदर है, that situation is not going to let him act in an honorable way. Rather, he is going to act in the way in which he is acting, an irrational way, ठीक है, in a rash way. अब ज़ाहिर है थ्रू आउट द प्ले ही इज एक्टिंग रैश, ही इज एक्टिंग स्ट्रेंज विद ऑल द पीपल, हाउएवर, और उसी एक्शन का एक नतीजा ये है दैट ही किल्स पोलोनियस एज वेल। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले देयर इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी कि जब इविल कैरेक्टर्स की डेथ होती है तो सोशल ऑर्डर रिस्टोर होता है, एंड देयर इज एन एम्फेसिस ऑन रीयूनिफिकेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन। रीयूनिफिकेशन क्या है? He is unified with his mother in her death, and he has reconciled with Laertes, with whom he has spoiled relation. ठीक है, तो उसके साथ भी रिकन्सिलिएशन हो गई और इधर मदर के साथ भी उसकी रीयूनिफिकेशन हो जाती है। नाउ अब जिस तरीके से आपने इडिपस रेक्स में देखा कि सफरिंग्स के बाद, मसाइब के बाद जो ट्रेजिक हीरो है, ही इज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी एट द एंड। सेम इज द केस विद हैमलेट। he is also psychologically and intellectually performed individual after the experience of his suffering. हैमलेट जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो जो विजडम हीरो को आखिर में हासिल होता है आफ्टर सफरिंग,
इसको वो recognition का नाम देता है, एरिस्टोटल नेम्स इट एज recognition, ठीक है। और जो ये wisdom है, जो ये understanding है, it is gained after a lot of sufferings and experience of the evil deeds. Hamlet recognize करता है at the end कि जो उसकी efforts हैं to avenge the father, they are futile in nature if he's doing it for the sake of justice, because he's a Christian hero, he's a Christian and he believes in the divine providence, so it enables him to die at peace, कि वो आखिरकार peace में है कि भाई if the justice is not served in this world, then ultimately it is going to be served in the next world. So Hamlet he prefers death to disgrace, और जो उसकी nobility थी which he lost by acting in the strange way and insulting his mother and murdering Polonius, that nobility is restored at the end. अच्छा, अब हैमलेट जो है ही इज एप्रिशिएटेड मोर फॉर, या जो उसकी क्रिटिकल जो उसके ऊपर डिस्कशन होती है, इट इज मोर बेस्ड ऑन एंड मोर फोकस्ड ऑन द सफरिंग्स के जो मसाइब का उसको सामना करना पड़ता है, जो साइकोलॉजिकल तकालीफ उठाता है, एंड इट इज़ लेस फोकस्ड ऑन द हिज एरर ऑफ जजमेंट, यू कैन कॉल इट, और यू कैन कॉल इट हिज प्रोक्रेस्टिनेशन। अब हैमलेट चूंकि एक ट्रू किस्म का क्रिश्चियन है, क्रिश्चियंस आपको पता है दे हैव sort of strange belief na, कि if someone slaps you on one side you should give the other side of your face that you can slap here as well, ठीक है। So you are not supposed to react, you are not supposed to take revenge. However, अब हैमलेट एक ऐसी सिचुएशन में है कि if he does not act, if he does not take revenge, then it will be a situation where he will encourage the spread of the evil. And being a true Christian, you cannot allow or you cannot encourage the spread of the evil. On the other hand, if he reacts and if he avenges his father's death and if he kills Claudius, then he is going to be part of the evil again, which is a situation which is not desirable being a true Christian. So he says, "Oh, cursed spite, that ever I was born to set it right." कि इस मामले को सीधा करने के लिए मुझे पैदा किया गया, दैट वॉज द कर्स्ड मोमेंट फॉर हिम। अब हेमलेट जो है ही इज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल और ही हैज़ डीप इनसाइट टू ह्यूमन साइकोलॉजी, हाईली किस्म का इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल है और हाईली किस्म का फिलोसॉफिकल जो है वो शख्सियत है। अब वो ऐसे मसले में फंस गया है जो कि मॉरल नेचर का है, जो कि रिलीजियस नेचर का है, और वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे ही फेल्स टू डील विद देम सक्सेसफुली। जो उसकी फेलियर की रीज़न है, इट इज़ his philosophical approach toward life, it is his moral approach toward life, ना कि कंटेम और ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है, ये जो मतलब कि मॉरल अप्रोच है, ये उसको फोर्स करती है टू कंटेम्पलेट, इट इज़ नॉट द वीकनेस ऑफ हिज करेक्टर, कि वो कमज़ोर नहीं है, कि आखिर में जब उसको डुअल के लिए चैलेंज किया जाता है तो ही एक्सेप्ट्स इट इमीडिएटली, इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट वीक, ही इज़ नॉट अ कावर्ड, ही इज़ अ ब्रेव इंडिविजुअल। हाउएवर, जो उसकी फिलोसॉफिकल और जो उसकी रिलीजियस और जो उसकी मॉरल अप्रोच टूवर्ड लाइफ है, दैट अप्रोच फोर्सेस हिम टू कंटेम्पलेट हिज एक्शन अगेन एंड अगेन, और इस वजह से वो जो एक्शन है वो टाइमली ले नहीं पाता। So these are the things somewhat that are related to Hamlet as a tragic hero. Now we are going to shift our focus toward the other issues that are important for the action of the play. जो play का action है, जो main action है, उसको advance करने में, उसको complete करने में, there are certain factors that contribute a lot. So we are going to discuss those factors not included in your unit. However, they are important for understanding of Hamlet as a play, and there are chances that you may be asked a question regarding those things as well. Okay, so let us move on toward the next section.